नमस्कार और आज के इस गहरे अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर दिन हर पल हमारी आंखों के सामने होता है। बिल्कुल आंखों के सामने, लेकिन फिर भी हाँ, फिर भी हम अक्सर उसकी असली मायने भूल जाते हैं। हमारा आज का विषय है कि विज्ञान आखिर है क्या। बहुत ही शानदार टॉपिक है, क्योंकि जब भी विज्ञान का जिक्र होता है तो दिमाग में एक खास तरह की छवि बन जाती है। बिल्कुल, वही सफेद कोट पहने हुए लोग, हाँ, सफेद कोट, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं, जटिल गणितीय सूत्र और ऐसे उपकरण जो आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर होते हैं। एकदम सही कहा। लेकिन आज हम इस पूरी छवि को ना एक बिल्कुल नए और ताज़ा नजरिए से देखने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इस नजरिए को बदलने के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो कोई बहुत भारी भरकम रिसर्च पेपर नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा पूरा विश्लेषण आधारित है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय पर, जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हाँ, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो हमारा मिशन यहाँ उन किताबी परिभाषाओं को दोहराना नहीं है जिन्हें हम सब स्कूल में पढ़कर शायद अब तक भूल भी चुके होंगे। बल्कि हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे विज्ञान दरअसल हमारे सोचने का एक तरीका है, एक नजरिया है, दुनिया को देखने का एक चश्मा है जो सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, वो हमारे रसोई घर से लेकर खेल के मैदान तक हर जगह फैला हुआ है। मुझे लगता है कि इस स्रोत का चुनाव ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। सही कहा, क्योंकि अक्सर बड़े होने के बाद हम जो बुनियादी चीजें होती हैं ना, उनको बहुत हल्के में लेने लगते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और कक्षा 6 की ये किताब हमें याद दिलाती है कि विज्ञान सिर्फ डेटा इकट्ठा करना या फैक्ट्स को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक ऐसा नजरिया है जो हर उस इंसान के पास होता है जो अपने आसपास के माहौल को लेकर थोड़ी सी भी उत्सुकता रखता है। हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में उस नजरिए को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और ये अध्याय उसी नजरिए को दोबारा जगाने का काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत गहरे विचार से होती है। ये बात करता है बचपन की उस स्वाभाविक जिज्ञासा की, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। हाँ, क्यूरियोसिटी। अगर हम ध्यान दें तो एक छोटा बच्चा हर वक्त सवालों से भरा रहता है। उसके पास सिर्फ क्यों और कैसे वाले सवाल होते हैं। बिल्कुल, जैसे आसमान का रंग नीला क्यों है, बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, चिड़िया कैसे उड़ती हैं। हम सबने बचपन में कभी न कभी ये सवाल पूछे हैं। और किताब बहुत ही स्पष्ट रूप से कहती है कि यही सवाल पूछने की जो कला है वही विज्ञान की सबसे मजबूत और इकलौती नींव है। लेकिन विडंबना देखिए ना, जैसे जैसे लोग मिडिल स्कूल में पहुंचते हैं या बड़े होते हैं तो समाज या हमारा जो सिस्टम है वो अक्सर इस जिज्ञासा को शांत कर देता है, दबा देता है एक तरह से। लेकिन स्रोत हमें चुनौती देता है कि ये सवाल पूछने की आदत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि उम्र के साथ इसे और भी परिपक्व होना चाहिए। और उस परिपक्वता को समझाने के लिए इस अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो जिगसॉ पजल वाला रूपक। बिल्कुल, मुझे वो इस पूरी चर्चा का सबसे आकर्षक हिस्सा लगा। विज्ञान की तुलना एक विशाल जिगसॉ पजल से की गई है। लेकिन ये कोई आम पजल नहीं है जिसे हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। नहीं, इसके डिब्बे पर कोई तस्वीर नहीं छपी है कि अंत में यह कैसा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, इसके टुकड़ों की कोई गिनती भी नहीं है। अनंत टुकड़े हैं। तो जब भी मानव जाति कोई नई खोज करती है तो हम उस अनंत पजल में ज्ञान का एक नया टुकड़ा जोड़ देते हैं। ये विचार अपने आप में बहुत मुक्तिदायक लगता है मुझे। क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि विज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। हम जो कुछ भी जानते हैं वो बस उस बड़ी पजल का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, ज्ञान की कोई अंतिम सीमा नहीं है। और हर नया जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता है। और पता है, पजल वाले इस रूपक का एक और पहलू है जो बहुत ही शक्तिशाली है। वो कौन सा? स्रोत बताता है कि नई खोजें सिर्फ पजल में नए टुकड़े ही नहीं जोड़ती, अच्छा, बल्कि कई बार वे हमें कुछ ऐसा दिखाती हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है। मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अनएक्सपेक्टेड। कभी कभी एक नई खोज ये साबित कर देती है कि हमने बरसों पहले पजल का जो पुराना टुकड़ा किसी खास जगह पर रखा था, वो दरअसल गलत जगह पर था। बिल्कुल, वो गलत जगह पर था। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हमारी पुरानी समझ, चाहे वो हमें कितनी भी मजबूत क्यों ना लगे, नई जानकारी आने पर पूरी तरह से बदल सकती है। और यही विज्ञान की खुद को सुधारने की, सेल्फ करेक्ट करने की अद्भुत क्षमता है। विज्ञान की असली ताकत शायद इसी बात में छिपी है
कि वो किसी भी धारणा को अंतिम सत्य मानकर नहीं बैठता। एकदम सही। जब कोई नया साक्ष्य या एविडेंस सामने आता है तो पुरानी मान्यताओं को बदलना पड़ता है। पजल के उस पुराने टुकड़े को उठाकर उसकी सही जगह पर रखना पड़ता है। और इस काम में ना बहुत विनम्रता की आवश्यकता होती है। यही वैज्ञानिक सोच का मूल है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में खोजने के लिए अनगिनत रहस्य मौजूद हैं, चाहे वो रेत का एक बारीक कण ही क्यों ना हो, जिसे हम रोज अपने जूतों से झटक देते हैं, या फिर मीलों तक फैली विशाल पर्वत श्रृंखला है। खास का एक साधारण तिनका भी अपने भीतर जटिल जैविक रहस्य समेटे हुए। हर चीज हमें उसे करीब से देखने और समझने के लिए आमंत्रित कर रही है। अब जब साधारण चीजों की बात निकली ही है तो स्रोत के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे विज्ञान के जादू को उजागर करता है। जादू। हाँ, क्योंकि हम अक्सर विज्ञान को अंतरिक्ष या क्वांटम फिजिक्स जैसी भारी भरकम चीजों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन किताब हमारा ध्यान हमारे ठीक सामने घट रही घटनाओं की तरफ खींचती है। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है एक छोटे सूखे हुए बीज का। वो बीज जो देखने में एकदम बेजान लगता है। हाँ, लेकिन जब उसे मिट्टी और पानी मिलता है तो वो एक जीवित हरे भरे पौधे में बदल जाता है। या फिर एक कैटरपिलर का उदाहरण ले लीजिए, जो पत्ते खाता है, अपने चारों ओर एक कोकून बुनता है और फिर पूरी तरह से बदलकर एक सुंदर तितली के रूप में बाहर आता है। बचपन में ये सब हमें किसी जादू जैसा ही तो लगता था। बिल्कुल, रात में आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना और ये सोचना कि वो क्यों चमक रहे हैं। पर विडंबना ये है कि हम बड़े होकर इन चमत्कारों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हम इन्हें देखना ही बंद कर देते हैं। लेकिन वास्तव में यही तो शुद्ध विज्ञान है। और प्रकृति के इन चमत्कारों से आगे बढ़कर स्रोत हमारी अपनी बनाई हुई दुनिया और रोजमर्रा के सामान में भी विज्ञान की मौजूदगी को दर्शाता है। जैसे वो ज्योमेट्री बॉक्स वाला उदाहरण। हाँ, वो बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है। अगर कोई भी उस छोटे से स्कूल बैग वाले बॉक्स को खोलकर देखे तो उसमें प्लास्टिक का बना हुआ एक रूलर होता है, रबर होता है, उससे बंद रखने के लिए एक छोटा सा चुंबक लगा होता है और शायद ताले की एक धातु वाली चाबी भी हो। तो एक ही बॉक्स के अंदर प्लास्टिक, रबर, चुंबक और धातु सब मौजूद है। और ये सभी सामग्रियां एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। विज्ञान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इन सामग्रियों की बनावट क्या है। एक चुंबक लोहे को क्यों खींचता है लेकिन प्लास्टिक को नहीं? हम इन चीजों को उनकी विशेषताओं के आधार पर कैसे पहचानते हैं? ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, नहीं, बल्कि किसी भी इंसान के लिए मटेरियल साइंस को समझने का सबसे बुनियादी और बेहतरीन तरीका है। और चीजों की बनावट से बात अगर हमारी सबसे पसंदीदा चीज पर आए, यानी कि भोजन। हाँ, भोजन, तो स्रोत ने वहां भी बहुत ही शानदार तरीके से विज्ञान को जोड़ा है। भारत जैसे देश में जहां हर कुछ किलोमीटर पर व्यंजन बदल जाते हैं, भोजन तो हमारी संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है ही। लेकिन हमारी थाली में जो खाना है वो दरअसल है क्या? जब हम रसोई में कच्चे अनाज और दालों से एक स्वादिष्ट व्यंजन पकाते हैं तो वो जो पूरी प्रक्रिया है वो किसी केमिस्ट्री लैब में होने वाले प्रयोग से कम थोड़ी है। मसालों का एक साथ मिलना, गर्मी पाकर उनका स्वरूप बदलना, सब केमिस्ट्री है। किसी तरह पानी का उदाहरण भी बहुत दिलचस्प दिया गया है। पानी को जब रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है तो वो ठोस बर्फ बन जाता है, और उसी पानी को जब गैस पर उबाला जाता है तो वो भाप बनकर हवा में गायब हो जाता है। ये थर्मोडायनामिक्स और पदार्थ की अवस्थाओं का कितना सीधा और सटीक उदाहरण है। सर्दियों में नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए और गर्मियों में पीने के लिए बर्फ का ठंडा पानी। हमारी शारीरिक जरूरतें भी तापमान के इस विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। और तापमान का जिक्र आते ही शरीर के तापमान को मापने का विचार भी स्वाभाविक रूप से सामने आ जाता है। जब किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर से शरीर की गर्मी मापना, वो भी तो विज्ञान का हिस्सा है। स्रोत के इन सभी अलग अलग उदाहरणों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं ना, हाँ, तो एक बहुत बड़ा नजरिया सामने आता है। वो क्या? ये स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान सिर्फ दूरबीन से आकाशगंगाओं को देखने या पनडुब्बी से महासागर की गहराई नापने का नाम नहीं है। ये हमारे रसोई घर में पकने वाले खाने में मौजूद है, हमारे शरीर के तापमान में है, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में है। बड़ी बड़ी वैज्ञानिक क्रांतियां अक्सर ऐसे ही छोटे और साधारण अवलोकनों से शुरू हुई हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखने लगते हैं तो हर साधारण चीज असाधारण लगने लगती है। बिल्कुल। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, क्या अगर ये सब विज्ञान है तो हम इस वैज्ञानिक सोच को अपनी जिंदगी में एक प्रक्रिया के रूप में कैसे लागू करते हैं? ये बहुत अहम सवाल है और किताब यहाँ एक ऐसी अवधारणा को डिकोड करती है जिसे अक्सर बहुत जटिल माना जाता है। साइंटिफिक मेथड। हाँ,
वैज्ञानिक विधि। लोगों को लगता है कि ये कोई ऐसा मंत्र है जो सिर्फ वैज्ञानिकों को ही पता होता है। लेकिन स्रोत इसे एक बहुत ही सरल और व्यवस्थित 5 चरणीय प्रक्रिया के रूप में समझाता है। 5 स्टेप प्रोसेस। हाँ, सबसे पहला कदम है अवलोकन करना, यानी ऑब्जर्व करना। अपने आसपास किसी ऐसी चीज पर ध्यान देना जो दिलचस्प हो या समझ से परे हो। दूसरा कदम है सवाल पूछना। जो देखा है उसके आधार पर दिमाग में ये आना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा कदम है अनुमान लगाना, यानी गैस करना। अपने अनुभव के आधार पर उस सवाल का एक संभावित कारण सोचना। चौथा कदम है परीक्षण या टेस्ट करना। यह जांचना कि जो अनुमान लगाया गया था क्या वो सही है। और पांचवा तथा अंतिम कदम है विश्लेषण या एनालाइज करना। परिणामों को देखकर ये तय करना कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। इस 5 चरणीय प्रक्रिया को हवाई बातों से बाहर निकालकर जमीन पर लाने के लिए स्रोत ने जो उदाहरण दिए हैं वो सच में कमाल के हैं। जैसे वो पेन के लिखना बंद कर देने वाला उदाहरण। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ जरूरी लिख रहा है और अचानक उसका पेन चलना बंद हो जाता है। उस क्षण वो व्यक्ति क्या करता है? वो सबसे पहले रुकता है और देखता है कि पेन नहीं चल रहा। ये हो गया पहला चरण, अवलोकन। फिर वो सोचता है कि पेन क्यों नहीं चल रहा। ये हुआ दूसरा चरण। फिर सवाल। उसके तुरंत बाद उसका दिमाग एक संभावित कारण सोचता है कि शायद स्याही खत्म हो गई है। और ये है तीसरा चरण, अनुमान। लेकिन वो इंसान केवल अनुमान लगाकर रुक नहीं जाता। नहीं, वो उस पेन को खोलकर अंदर की रीफिल चेक करता है। ये जो खोलकर देखने की क्रिया है, यही तो परीक्षण है। चौथा चरण। अगर रीफिल खाली निकलती है तो विश्लेषण ये कहता है कि हमारा अनुमान सही था और समस्या का समाधान मिल गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रीफिल में स्याही मौजूद होती है। हाँ, तब दिमाग एक नया अनुमान लगाता है कि अगर स्याही है तो शायद वो आगे से सूख गई होगी। और फिर एक नए तरीके से परीक्षण होता है, जैसे किसी रफ कागज पर पेन को थोड़ा जोर से रगड़ना। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें हम अनजाने में एक समस्या को देखते हैं, कारण सोचते हैं, उसे टेस्ट करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। यही वो साइंटिफिक मेथड है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी हाईटेक लैब्स में इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इसे बड़े स्तर पर करते हैं और हम पेन चलाने के लिए। और यही इस पूरे अध्याय का सबसे शक्तिशाली और गहरा संदेश है कि हम सभी किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक ही हैं। स्रोत कुछ और बेहतरीन रोजमर्रा के उदाहरण भी देता है। जैसे रसोई में जब प्रेशर कुकर से दाल का पानी बाहर रीसने लगता है तो खाना बनाने वाला व्यक्ति तुरंत सोचता है, क्या मैंने पानी ज्यादा डाल दिया था या गैस तेज है? और फिर वो गैस धीमी करके परीक्षण करता है। या फिर एक साइकिल मैकेनिक का काम देखिए। वो तो एकदम परफेक्ट उदाहरण है। जब टायर पंक्चर होता है तो वो फ्लैट ट्यूब में हवा भरता है और उसे पानी के टब में डुबोता है ताकि बुलबुले देखकर हवा के रिसाव की सही जगह का पता लगा सके। ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक परीक्षण है। इसी तरह एक इलेक्ट्रिशियन जब किसी खराब लाइट को ठीक करने आता है तो एक-एक करके चेक करता है कि खराबी बल्ब में है, वायरिंग में है या मेन स्विच में। इन सभी उदाहरणों से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। वो क्या? कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित और तार्किक तरीका अपनाता है तो वो असल में विज्ञान का ही अभ्यास कर रहा होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विज्ञान सिर्फ तथ्यों को याद करने का या रट्टा मारने का कोई विषय नहीं है। ये दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने का एक व्यावहारिक टूल है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके को अपने जीवन में उतार ले तो वो न केवल एक बेहतर छात्र बन सकता है बल्कि एक बेहतर पेशेवर और एक सुलझा हुआ इंसान भी बन सकता है, जो समस्याओं से घबराने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वैज्ञानिक सोच को विकसित करने की दिशा में स्रोत एक और बहुत ही अहम पहलू पर ध्यान खींचता है जो अक्सर हमारी शिक्षा व्यवस्था में नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, और वो है सहयोग यानी टीम वर्क। विज्ञान की दुनिया में ये धारणा बिल्कुल गलत है कि एक अकेला जीनियस इंसान किसी बंद कमरे में बैठकर सारी महान खोजें कर लेता है। असल में वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। आज दुनिया भर में वैज्ञानिक बड़ी बड़ी टीमों में एक साथ काम करते हैं। वे अपना डेटा एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के विचारों पर बहस करते हैं और गलतियों को सुधारते हैं। अध्याय बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये सलाह देता है कि अगर किसी सवाल का जवाब खुद से न मिले तो उसे वहीं छोड़ना नहीं चाहिए। अपने दोस्तों की मदद लेना, उनसे चर्चा करना विज्ञान की प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि मिलकर चीजों को खोजना हमेशा अकेले जूझने से अधिक प्रभावी होता है। और सहयोग के साथ साथ एक और भावना है जिसे स्रोत बहुत अहमियत देता है। वो है आनंद की भावना। जी हाँ, किताब में एक दृश्य का वर्णन है
जहां बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढे में भरे पानी में बच्चे छपाछप कर रहे हैं। जिस आजादी, निडरता और खुशी के साथ वे बच्चे उस पानी के साथ खेल रहे होते हैं। स्रोत कहता है कि विज्ञान को भी ठीक वैसा ही एक आनंदपूर्ण अन्वेषण होना चाहिए। जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल, ये कोई भारी बोझ या सजा नहीं है। ये तो इस अद्भुत ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ एक तरह का खेल है। हम जितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें दुनिया को देखकर उस बाल सुलभ खुशी और उत्साह को कभी मरने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब सीखने में मजा आता है तभी असली खोज होती है। अध्याय के बिल्कुल अंत में ना भाषा का एक बहुत ही मजेदार लेकिन अर्थपूर्ण खेल खेला गया है। हाँ, वो अंग्रेजी के शब्दों वाला खेल। स्रोत कहता है कि अगर किसी को एक समझदार इंसान बनना है, जिसे अंग्रेजी में अ वाइज पर्सन कहते हैं, WISE, तो उसे हमेशा सवाल पूछने वाला इंसान बनना पड़ेगा। यानी एक वाइस पर्सन, WHYS। जो इंसान ये पूछने की हिम्मत रखता है कि ऐसा क्यों है, केवल वही अंततः समझदारी और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये महज शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी वैज्ञानिक सोच का सार है। ज्ञान की शुरुआत हमेशा एक सवाल से ही होती है। क्या बात है! वाइज बनने के लिए वाइज पूछना जरूरी है। बहुत खूब। तो इस विचार के साथ ही हम आज के इस विशेष विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटते हैं। आज हमने कक्षा 6 की एक किताब के जरिए विज्ञान के असली अर्थ को डिकोड किया। हमने देखा कि विज्ञान कोई डराने वाला विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा का विस्तार है। ये एक ऐसी अनंत पजल है जिसका हर टुकड़ा हमें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अंतरिक्ष से लेकर हमारे रसोई घर तक और हमारे ज्योमेट्री बॉक्स से लेकर बुखार मापने वाले थर्मामीटर तक विज्ञान हर जगह मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, हमने ये जाना कि साइंटिफिक मेथड कोई किताबी फॉर्मूला नहीं, बल्कि हम सबका अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने का स्वाभाविक तरीका है। हम सभी अपने आप में वैज्ञानिक हैं। ये विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि सवाल करने की आदत और दुनिया को एक नई नजर से देखने की क्षमता वो हम सभी के भीतर मौजूद है। जरूरत है तो बस उस पर जमे धूल को साफ करने की और अपने आसपास घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं में छिपे उस जादू को फिर से महसूस करने की। इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक ऐसे विचार पर रुकना चाहते हैं जो इसी चर्चा से निकला है। एक ऐसा सवाल जिस पर गहराई से सोचा जाना चाहिए। स्रोत ने विज्ञान को एक ऐसी जिगजॉ पजल बताया जिसके टुकड़े कभी खत्म नहीं होते और जहां हर नया जवाब अनगिनत नए सवालों को जन्म दे देता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ज्ञान का हर नया टुकड़ा हमारे सामने एक और बड़ा रहस्य खड़ा कर देता है, तो क्या विज्ञान का अंतिम लक्ष्य कभी भी इस ब्रह्मांड के सारे जवाब खोजना हो सकता है? क्या हम कभी उस बिंदु पर पहुंच पाएंगे जहां पूछने के लिए कोई क्यों नहीं बचेगा? या फिर विज्ञान का असली उद्देश्य जवाबों का एक पहाड़ खड़ा करना है ही नहीं, बल्कि महज ये सीखना है कि हम इस अनंत प्रकृति से और भी बेहतर और अधिक गहरे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी मंजिल की परिभाषा को ही बदल देता है। क्या हमारी असली उपलब्धि जवाबों के अंत में है, या फिर सवालों के लगातार बेहतर होते जाने में? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए विचार करने योग्य है। हम आशा करते हैं कि सुनने वाले सभी लोग इस सवाल को अपने साथ रखेंगे। अपने आसपास की दुनिया को उसी उत्सुकता से देखें जैसे कभी बचपन में देखा करते थे। अपने हिस्से के सवाल पूछते रहें, अपने जवाब ढूंढते रहें, और रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे विज्ञान के इस आनंदपूर्ण अन्वेषण को लगातार जारी रखें। आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome in. Let's talk about the absolute exhaustion of trying to stay informed right now. Oh, it's completely draining. Right. If your day-to-day life is anything like what most of us experience, it is just packed to the brim, like heavy jargon-filled information everywhere. Yeah, you're constantly navigating adult responsibility. Exactly. You're deciphering complicated reports at work. You're scrolling through this relentless algorithmic flood of news. Trying to process massive data sets just to figure out how to live your life. It's heavy, and frankly, it can lead to this state of constant mental fatigue. Yeah, decision fatigue, information fatigue, all of it. So today, we're taking a massive, intentional step back. We are hitting the pause button on the overwhelming complexity of adulthood. We really are. And the mission today is to rediscover the single most powerful tool for learning that you possess. We are stripping away the noise. Yeah. That's the goal today, to get back to the absolute foundations of how we understand the world around us. Yeah. And to do that,
The source material we're using is, well, it's a bit of a curveball. A huge curveball. Right. It is not a peer-reviewed academic journal. It's not a dense philosophical treatise. No, and I was genuinely surprised by how much I actually needed to read this text. Same here. Our source for today's deep dive is Chapter 1 of a Grade 6 science textbook. Yep. Grade 6. Specifically, it's a chapter titled The Wonderful World of Science, Curiosity. We are going right back to the classroom. Back to the very beginning. But I can promise you, this isn't the dry, rote memorization lecture you might be dreading. It strips the concept of scientific inquiry down to its beautiful, fundamental basics. Setting the stage here requires understanding the specific audience this book was written for, though. Right. It's designed for children who are just entering what the curriculum calls the middle stage of school. So they've just finished the preparatory stage. Exactly, which is heavily focused on play, loose exploration. And now, at 11 or 12 years old, they're being introduced to science as a formal, dedicated subject. But the brilliance of this chapter lies in its foundational philosophies. Yeah. The core messages it imparts to these preteens are the exact psychological and intellectual frameworks we as adults so desperately need to survive our own information-overloaded lives. Oh, without a doubt. Okay, let's unpack this, because the very first thing this textbook does is completely redefine the word science. It really does. If you stop the average adult on the street, they probably think of science as a dusty encyclopedia. Just a static, massive list of facts. Right. Figures you have to memorize, the periodic table, the distance to the moon. The anatomy of a frog. Yes. But this grade 6 textbook throws that definition out the window on page 1. It defines science not as a collection of established facts, but as a way of thinking, observing, and doing things. A way of doing things. It calls it an adventure where we ask questions and try to figure out how things work. And to illustrate that adventure, the authors rely on a central guiding metaphor. They describe science as a giant, unending jigsaw puzzle. A giant jigsaw puzzle. I love that. Yeah. Perfect. Right. Yeah. Every single new discovery we make, whether we're talking about humanity as a whole making a technological leap, or just you as an individual learning something new about your neighborhood, Yeah. adds another piece to that puzzle. And because the universe is so incredibly vast, there is no limit to what can be discovered. It's endless. Exactly. Every new piece of knowledge naturally exposes the empty spaces around it, which leads to more questions, which leads to more pieces. That unending puzzle is a great visual. But the part of this metaphor that really stopped me in my tracks was how it handles the concept of making a mistake. Oh, this is crucial. What's fascinating here is the psychological safety the text builds around being wrong. It explicitly tells these students that sometimes we find that a puzzle piece has been put in the wrong place. And when that happens, it simply needs to be moved. Right. New discoveries constantly change our understanding of the world. Think about how profound that lesson is for a functioning adult. It's huge. It highlights the self-correcting nature of science. In our adult lives, we tend to hold on to our opinions, our politics, or our understanding of a situation with an iron grip. We tie our egos to our puzzle pieces. We do. That's the core issue, isn't it? If I admit a puzzle piece is in the wrong place during a corporate board meeting or in the middle of an argument with a partner, It feels like a personal failure. yes, we treat changing our minds as a weakness. We do, and we suffer for it. We succumb to confirmation bias because we would rather force a piece to fit where it doesn't belong than admit we made an error. We just jam it in there. Exactly. Yeah. But this grade 6 textbook calmly dismantles that anxiety. It reminds us that realizing a piece is in the wrong place is not a failure of intelligence. It's just part of it. It is a required mechanical step in the puzzle-solving process. It is perfectly okay necessary, even to take that piece out and adjust your worldview based on new evidence. It removes the ego from learning entirely. Entirely. It's incredibly freeing when you look at it that way. And the text goes out of its way to prove that this learning, this puzzle solving, isn't confined to a sterile laboratory with people wearing white coats. That's right. It's not just for the professionals. It spends a significant amount of time establishing the sheer dizzying scope of what we can observe. It uses vivid imagery to show that science spans the entire spectrum of existence. The micro and the macro. Exactly. It moves from studying tiny microscopic grains of sand all the way up to towering, rugged mountain ranges. The visual examples in the source material really drive this point home to the students. Yeah, they're beautiful. It shows a barren desert landscape right next to a beautiful sandy coast.
It dives underwater to describe a vibrant ocean reef filled with bright yellow fish and purple coral. And then it just shifts completely. It aggressively pans the camera up, shooting all the way into the sky to show a glowing galaxy, the vastness of outer space. It even asks the reader directly, have you ever looked up at the night sky and wondered why the stars shine? Or watched a flower bloom and wondered how it knows when to open. Right. It is actively trying to break down the intimidation factor of science. Groundbreaking discoveries or just personal aha moments can happen anywhere. Anywhere. From the absolute depths of the ocean to the vastness of outer space, and even right in your own kitchen. And that brings us to a really intentional transition by the authors. Mm-hmm. After zooming way out to these massive universal concepts like galaxies and oceans, The textbook snaps right back down. yes, back down to the intimate, everyday tapestry of normal life. It essentially lays out a curriculum of the mundane. It promises the students that these grand ideas are actually deeply embedded in their daily routines. Starting with our home. Planet Earth. Noting it's the only planet we know that supports life, it asks the students to observe the mechanics of life right in front of them. Watching a tiny seed sprout into a plant. Or seeing a caterpillar munching on a leaf before transforming into a butterfly. And how do those things grow? They need food. This is where the textbook gets incredibly rich and sensory. The authors clearly lean into the everyday experience of eating, particularly highlighting the vast culinary diversity of a country like India. Oh, the descriptions are amazing. They want the students to look at their dinner plates not just as a source of calories, but as a scientific mystery waiting to be unraveled. The text establishes the baseline of mammalian survival first, showing a mother cow feeding her little white calf in a green field. But then it moves to human culture. It features illustrations of golden rotis alongside fresh red onions and a bowl of green curry. It shows a traditional thali. A large middle plate. Right, absolutely packed with an assortment of small bowls filled with yellow dal and stuffed breads. It describes a crispy dosa served with fluffy white idolas and chutneys on a bright green banana leaf. Making me hungry just talking about it. I know. And after showing all this delicious food, the text simply asks, what are they made of? How do we find out? By doing that, the textbook takes the most familiar routine in the world, our daily meals, and forces the reader to look at it through the lens of inquiry. Because adults usually suffer from familiarity blindness. We do. We just eat to fuel up for the next meeting. We don't look at a complex meal and marvel at the chemical transformations that had to occur to create it. Not at all. And the book doesn't stop with food. It moves right along to the objects sitting on the student's desk. The paper they write on. The metal key, the plastic ruler, The rubber eraser. the little magnet keeping their pencil box snapped shut. It turns everything into a question. Are these objects made of different materials? How do we separate them? When you start looking at the world this way, it's almost overwhelming. It is. And then it turns its attention to water. I have to mention the phrasing here because it calls water a delightful substance. A delightful substance. Not just a necessary chemical compound for hydration, a delightful substance. It asks, have you ever jumped in a puddle when it rained? And shows an illustration of kids joyfully splashing through the rain. And from that image of pure, unstructured play, it smoothly transitions into physics and states of matter. Right. It asks if the reader has noticed that water freezes into solid ice when cooled and boils into invisible steam when heated. It grounds the abstract concept of temperature in physical, relatable sensations. It talks about the relief of enjoying a cool drink of water in the sweltering summer, or the comfort of taking a warm shower in the freezing winter. It even bridges into human biology by asking how we understand hot and cold when our own bodies get hot with a fever. If we connect this to the bigger picture, Yeah. this is where the textbook delivers one of its most crucial philosophical lessons. Okay. It states that as we discover more and more about all these seemingly disconnected things, from the complex spices on our folly, to the magnet in the pencil box, to the rain in the puddles, to the glowing stars in the sky. We start realizing they're connected. Deeply interconnected. The universe is not a chaotic pile of isolated facts. It is a web. A web. By pulling on a single thread, like asking why a puddle evaporates on a sunny day, you start unraveling the mechanics of the global weather system, the water cycle, and the oceans themselves. Okay, here's where it gets really interesting. Because the textbook executes a brilliant narrative trick right about here.
It does. After showing you the galaxies and the oceans and the thalass, it turns the camera around and points it directly at you, the reader. Yep. It drops the biggest twist of the chapter. You are already a scientist. It's an incredibly empowering statement for a young student, but arguably more so for an adult. Truly. It explicitly says, even though you may have not realized, you have already been finding answers to many of your questions. And to prove this, it provides an example of the scientific method in action that every single person listening to this has experienced. The dead pen experiment. The dead pen. Let's walk through it because we've all been there. You are writing a note or signing a document, and suddenly your pen just stops writing. It's completely dead. The worst. The book breaks down your natural split-second reaction. First, you ask a question. Why did my pen stop? Next, you make a guess. You think, the ink must be finished. Then you don't just sit there paralyzed. You test your guess. You unscrew the casing, you pull out the little plastic tube, and you check the ink refill. This is the critical juncture right here. Yeah. You look at the refill. If it is empty, your guess was correct. You throw it away and get a new one. Mystery solved. But But the text asks, suppose you found that the ink was not finished. There's plenty of ink still in the tube. Now what? you have to analyze that result. Your first guess was wrong. Yeah. So you make a new guess. Maybe the ink at the tip has dried up. To test this new guess, you try something else, like scribbling hard on a scrap piece of paper to get the ballpoint rolling again. I want to pause here and think about the adult parallel, because the book makes this sound so logical. Right. But in real life, when my pen dies, I don't calmly reevaluate my hypothesis. I usually just get annoyed. Oh, absolutely. I shake the pen aggressively. I scribble harder, tearing the paper, refusing to accept that my initial assumption was wrong. That is adult stubbornness in a nutshell. We take an assumption, dress it up as a fact, and get angry when reality doesn't comply. So true. This grade 6 textbook is teaching a much healthier framework. Let's distill that dead pen example into the textbook's official 5 steps of the scientific method. Let's do it. Step 1. Observe. You notice something you don't understand, like the pen failing. Step 2. Wonder. This observation prompts a question: why did it stop? Step 3. Guess. You propose a possible answer. Step 4. Test. You investigate through action, like opening the pen. Step 5. Analyze. You look at the results to see if your guess was right. Observe, wonder, guess, test, analyze. Exactly. Once you see those 5 steps laid out so plainly, you realize you use this framework dozens of times a day, often without noticing. All the time. The textbook actually provides a rapid-fire list of other everyday scientists applying this exact method to daily chores. It mentions the cook. Yes. Someone is making dinner and wonders why the yellow dowel has suddenly bubbled up and spilled out of the pressure cooker all over the stove. A mess. They ask, was there too much water? Was the heat too high? They are observing, questioning, and adjusting their variables for next time. Then they use the example of a mechanic. There's an illustration of a boy trying to fix a flat bicycle tire. How does he locate an invisible hole? The water trick. He fills a metal basin with water, takes the rubber inner tube out, and pushes it under the surface, looking for the tiny bubbles that reveal where the air is escaping. That is a pure, elegant test of a hypothesis. It really is. And finally, the electrician. You flip a switch on the wall, and the ceiling light doesn't turn on. Is the bulb dead, or is the switch breaking? You test it by swapping in a new bulb. If there's light, your first guess was right. If it's still dark, you know it's the switch. Grouping these everyday tasks together removes the academic intimidation factor. The text explicitly states, scientists are people who follow the scientific method to solve problems or to discover new things. But anyone who follows the scientific method is working like a scientist. Working like a scientist. When we attempt to systematically find answers, we step into that role. I want you, the listener, to think about your day so far. Yeah, think about it. Search for a moment where you applied this method without realizing it. Did an app on your phone crash, and you guessed it needed an update? So you check the app store. Or did you try a new driving route to work, guessing it would bypass traffic, only to test it and analyze that it actually took 10 minutes longer? You are constantly observing, guessing, testing, and analyzing. You are an active participant in putting together that giant jigsaw puzzle. But the textbook points out another beautiful, vital concept right after this. Which is that you do not have to put the puzzle together all by yourself. No. It heavily emphasizes the collaborative spirit of asking why. It explicitly tells these young students that science is rarely a solitary endeavor. That is a direct challenge
to the cultural myth of the lone genius. Right. We have this romanticized image of a brilliant, isolated individual having a eureka moment in a dark room. Adults internalize this. We really do. We feel an immense pressure to solve our professional and personal problems alone, viewing a request for help as an admission of incompetence. But the text corrects that notion early on. It tells the students that scientists across the world work together, communicating and collaborating in large teams. And it gives them highly practical advice. If you cannot find an answer yourself, ask your friends to help you out. Ask your friends. It notes that it is always more fun to discover things together. Don't sit in isolation and frustration because your pen is dead or your project at work is failing and you can't see the solution. Ask for help. The text makes a pointed effort to compare this collaborative inquiry to the children joyfully splashing in the rain puddles. It says, much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Learning is not supposed to be an agonizing chore. It is a fundamental, joyous human drive. The text encourages them to enjoy the journey, to keep exploring, and to never stop wondering about the mechanics of the universe. And it concludes with what I can only describe as the ultimate dad joke. Oh, the pun. The perfect little pun to wrap up a chapter entirely dedicated to curiosity. Right at the very end, it says, after all, to be a wise person, you must be a wise person. Spelled W-H-Y-S. A person who constantly asks why. This raises an important question for us, looking back at this material through the lens of adulthood. Yeah. This chapter was written to encourage preteens to maintain a natural curiosity they already possess. But as adults, we hemorrhage that exact spirit of inquiry. We do. The demands of life grind it out of us. We get busy, we get tired, we stop asking why, and we begin accepting things exactly as they are presented to us. If a process at work is inefficient or broken, we shrug and say, that's how it's always been done. If a piece of software glitches, we just reboot the machine without a second thought as to what caused the error. We accept the world at face value because asking why demands cognitive energy we feel we don't have. This textbook is a sharp, necessary reminder that we have to actively defend and nurture that wise person inside of us, regardless of our age. So what does this all mean? As we wrap up this deep dive, I think the most vital takeaway is a shift in perspective. A major shift. The core of being truly well-informed in this modern, complex age isn't about memorizing a million different data points. It isn't about the impossible task of knowing everything. It is about maintaining a relentless, childlike curiosity. It's about remembering the metaphor of the universe as a giant, unending jigsaw puzzle and recognizing that it is an absolute privilege to keep finding new pieces. Absolutely. It's about rigorously, but playfully, testing our guesses about how the world works with the exact same low-stakes energy we use to check the ink in a dead pen. It requires giving yourself the grace to be wrong. It is about finding the freedom to be curious and embracing the joy of slotting the right puzzle piece into place. Whether you are gazing up at a distant, glowing galaxy Or simply observing the intricate spices on your dinner plate. we want to leave you with a final thought to mull over as you transition back into the complexities of your day. It builds directly on that puzzle metaphor and the scientific method we just outlined. Think about this one. If the scientific method is simply a formalized way of guessing and testing, what deeply held belief or assumption in your adult life might just be an untested guess? Are you fiercely holding on to a piece of your personal jigsaw puzzle that actually belongs somewhere else entirely? Just waiting for you to have the courage to stop, observe, and finally ask why. A phenomenal question to sit with. Thank you so much for joining us on this unexpected journey back to the 6th grade and back to the foundational world of curiosity. It's been great. We will see you next time on the next deep dive. Keep asking why.